Good afternoon, dear student and concerned teachers present in the class. I am Bijay Sankar Sahu from Government High School Sargipali, Sundargarh. Welcome to everyone. This live class from Virtual Studio, District Education Office, Sundargarh. Dear student, you know language is dynamic. It's changing over a period of time, and grammar played a very vital role in this regard. And dear student, you know what is the importance of grammar to know a particular language, and the interpretation of grammar in a language is very important. So dear student, I am with a very interesting and important concept of your English grammar. So without wasting your time, let's begin. So let's move. Dear student, as you can find, today we are going to discuss a very important chapter and a very interesting concept of English grammar. So let's move. That is your phrasal verb. Dear student, you know while we are speaking English in front of others, listeners should take interest to listen to us. How we can develop our communication skill. That is very important. So to develop our communication skill so that listener will take interest to listen our words, whatever we are speaking. So we need to know the language and we know the various grammatical functions and its interpretation of a particular language. In case of English language also, it is applicable. And dear student, phrasal verb played a very vital role in spoken English as well as in written English. So let's begin our today's topic. So first of all, we will try to understand what is a phrasal verb. So let's understand its meaning. When an adverb particle is added to the main verb to make a new verb, the new verb is called as a phrasal verb. Dear student, normally a phrasal verb is a combination of more than one word. We also treated it as multi-word verbs. Again, I am repeating, we have multi-word verbs because we can find more than one word in such kind of verb. Dear student, let's take one instance over here. I have run out of money. You can able to see the picture over here. जड़े पर्सन कौन करची ना तो पर्स खोली এবং पर्स रे किछि नाही पैसा सब गायब माने खर्च हो जाई तो से कहूची आई हैव रन आउट ऑफ मनी पाखरे जहाँ भी पैसा थिला सब खर्च हो जाई এবং ता पाखरे किछि पैसा नाही. So dear student, you just see the charm of English here. You just see the two particular word here we combinedly using over here. That is, one is run, another one is out. It means here run out means, देखो, here run means something which is running, and out means बाहर ही जवा, बाहर को पड़ेगा. So here the combination of these two words give a very unique meaning. Run out. Run out means it is खाली ही जवा, पैसा गायब ही जवा. Okay. Next, the people of Monali are looking forward to a new source of living. Here another particular phrasal verb you can find, looking forward. Looking forward means they are searching for a new pattern of life or source of living or livelihood. Here the word, the combination of this kind of particular word where we can find the verbs which attach with a particle, or we can say that a preposition, give us a new term, a new meaning, and it is very, very interesting while we are using it in our sentences. So the phrasal verb has a new meaning most of the times. बेले बेले जतेबेले आमे पढ़ी थाउ जे दीटा वर्ड थाए नॉर्मली जो मीनिंग गुडा का एठी नॉर्मली प्ले करथांते से वर्ड गुडा का तार मीनिंग चेंज हि थाए जतेबेले कंबाइनली आमे यूज करथाउ जतेबेले से phrasal verb हिसाब रे यूज हि थाए. जेंति रन आउट, रन माने दौड़ीबा, आउट माने बाहर ही जिबा. यार अर्थ नुहे जे बाहर को पळेबा, बाहर को दौड़ीबा. यार अर्थ ही जिबा खाली ही जिबा बा समाप्त ही जिबा. So I have run out of money. Here the meaning of run out is shortage of money. That person is suffering from shortage of money. So dear student, in this way we have a very, very interesting, we can say that this concept, that is phrasal verb, that particularly add charms while we are speaking English.
So let's move to the next particular slide. Phrasal verbs and their meanings we'll try to understand. Here two examples more we will take. Some phrasal verbs are very easy to understand. It means normally whatever the verbs and the particle whenever it is used in the sentence, whenever we are reading it, we can easily understand it. So, for example, we went round the city. Went round the city means particularly we are moving round the city. Went round. Went is a verb we can say, and here round is a particle. And in this way, while you are using it combinedly, it provides a unique meaning. It provides a different meaning. But here in this particular sentence, we can easily know the meaning of the particular phrasal verb. We went round the city. Prices have come down. Come down means what? The value of the money is getting declined. Prices have come down. Prices have come down. From the picture you can easily understand here the value of the particular money is getting declined. Come down means decline. Come down. Tolaku palai asiba. The value tolaku palai asiba. What is price? The particular value of a money used in terms of normally price. जेतेबेले हमें normally use करथाउ the value of money. Money हला तमरो that may be currency, that may be coin. ताकू इतला में तार value को express करथाउ. हमें को particular unit express करथाउ ना price रा में express करथाउ. इटी prices have come down means इटी money रा value टा कौन है जी decline करी जाइए. In this way, we have come across two different other phrasal verbs. One is went round, another one is come down. Next, we will move to the next. Dear student, while we are using phrasal verb in the sentence, it is those who are listening to us. So while we are speaking English, we must use phrasal verbs. Next, let's guess the meaning. Here we will try to search or we will try to inquiry whether we can able to guess the meaning of the particular phrasal verb or not. Sometimes we face difficulties because whatever the phrasal verb we are having, they are sometimes quite difficult to understand. So we need to learn them properly. So here let's try to guess the meaning. One example, our request was turned down. So dear student, here what particularly phrasal verb it is used here? Turn down. Here turn down is the phrasal verb. Next, Lisa and Nisha have fallen out. Fallen out. Dear student, we will try to explore the meaning of the term or here the phrasal verb, whatever it is used, we may fail. We may fail because here whatever the word it is used to make phrasal verb, its meaning whenever we are trying to know, its meaning is coming different. Turn mane kona buli padiba. Down mane tolaku. Our request was turned down. यार अर्थ ये नुहे जे हमरो रिक्वेस्ट तळकू बुली पडला बुझी परछो तो एठी कोन हे जे थाए मीनिंग ता स्लाइड चेंज ही थाए तो हमें जेमती गेस करूथिबे बेस वर्ड को नेकी ता मीनिंग किछि डिफरेंट आसी पारे. That's why phrasal verb is quite interesting. Next, another example we will take. Lisa and Misa have fallen out. Fall mane dear student podi jiba and out means bahare. It means कोण bahare se mane podi gale. No, its meaning is different over here. While we are using these are the words in a particular sentence as phrasal verb, the students, its meaning is quite different. Here, what is the meaning of that phrasal verb turn down? Turn down means rejected. It means whatever we have requested to them, they rejected our proposal. अभी किसी हमें request कले, हमने turn down कर देले. Turn down कर देले माने कौन? प्रत्याख्यान कर देले हम रिक्वेस्ट को, मना कर देले हम रिक्वेस्ट को, कहले no. It means turn down. Quite interesting. Next, fallen out. Fallen out means dear student quarrel. You can able to find here Lisha and Misha is quarreling, shouting with each other. So fallen out means quarrel. It's not refers to tole padi jiba ba bahare padi jiba. So it is quite interesting. So while we are learning phrasal verbs, it is quite interesting. So next things, most phrasal verb of this type can be replaced by a single word verb. Just like we have learned here, turn down means rejected.
and fallen out means quarrel. So while we are trying to know the meaning of the particular phrasal verb, we can able to find the meaning in one word. Okay, so in this way we are learning here the phrasal verb. Next we will move to the next particular slide, dear student. Here, types of phrasal verb. Dear student, while we are using phrasal verb in the sentence, sometimes some phrasal verb take objects in it, and sometimes there may not be an object in the sentence. So dear student, on that basis, we have divided phrasal verb into two categories. So on the basis of the availability of object in a particular sentence, while we are using phrasal verb, there are two types of phrasal verbs, dear student, in this way. So like the ordinary verbs, phrasal verbs can be transitive or intransitive. So what do you mean by transitive and what do you mean by intransitive? Already you know little bit also, I will give you the idea. They can have their objectives or no objects at all. Object माने कौन? कर्म. हमें देखिबा example गोटे गोटे नहीं जाबा एठी हम first classification कर दबा. Phrasal verbs, it may be transitive and it may be intransitive. तापर हमें देखिबा transitive कौन? ना transitive phrasal verb सही phrasal verb जो मानकर कौन था dear student? Object था. The phrasal verbs have objects are called transitive phrasal verbs. For example, एठी हमें गोटे example नहीं जाबा. We have set off. Dear student, एठी देखि परथबो set off. Set गोटे verb of एठी गोटे particle लागि गला. ताको हमें preposition मध्ये कहि परिबा. So verb plus preposition, verb plus particle, it gives us a phrasal verb that is set off. And we have set off a school. Here object is there, dear student. Here object is there. We have set off. Here subject is there. Subject, dear student, verb, dear student, and this is the phrasal verb, dear student, and this is object. In this way, in this sentence, we have object. The phrasal verb carry an object. That's why such kind of phrasal verb, where it also have object, such kinds of phrasal verb are called as transitive phrasal verb. ताको हमें कौन कहि थाउ? Transitive phrasal verb. Second sentence हमें देखिबा. Would you please turn on the light? तमे बेड रे सोइछ ना कोठी गुटे चेयर रे बसिछ तम भाई को कि भौणी को तमे कहूछ जे would you please turn on the light? Turn on the light माने कोन? स्विच को ऑन कर दबा. लाइट रो स्विच को ऑन कर दबा. तो ताको हमें कोन बोली कहूचे? टर्न ऑन. डियर स्टूडेंट, अगेन देखो एठी टर्न माने बुली पड़िबा, ऑन माने समथिंग ऊपरे, but the meaning is coming that is different, that is switch on. Yes, turn on refers to switch on. Okay, that's why here you need to understand the phrasal verb and its uses very carefully. And while you become acquainted with the concept of phrasal verb, you will get a lot of charms while you are speaking, and the listener, those who are listening to you, they will also take much more interest while you are speaking with them, talking with them, by using all these phrasal verb. So both the phrasal verb here set off and turn on, both the phrasal verbs have objects. एठी की object ना एठी school हला object और एठी कोड़ा हला object एठी हला dear student light. Light हला object. So in both sentence जते बेले हमें देखुची phrasal verb नहीं जाउची आ सेठी रखुची गोटे गोटे object. तो सही particular phrasal verb को हमें कहि तो transitive phrasal verb. Okay, so this is clear. The verb particularly or the phrasal verb particularly which have objects in a sentence, those phrasal verbs are called as transitive phrasal verbs. So next we will move another type of phrasal verb, that is intransitive phrasal verb. Dear student, you can able to find in this particular sentences. Phrasal verbs do not have any objects are called intransitive phrasal verb. जो phrasal verb गुड़ा करो ऑब्जेक्ट न थाए सेंटेंस रे सेमान को हमें नॉर्मली विदाउट ऑब्जेक्ट हिसाब रे यूज करथाउ. तो सच काइंड ऑफ फ्रेजल वर्ब्स आर कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब. एग्जांपल हमें नहीं जबा माय कार हैज ब्रोक डाउन. एठी कार रे किछि जण जाई छंती बुली, यू कैन एबल टू फाइंड एवं तांकर कार टा कोन हिची ब्रोकन डाउन हिची. ब्रोकन डाउन मींस डियर स्टूडेंट स्टॉप फंक्शनिंग. Broken means, you know, broke mane bhangiba, down means tolo hijiba. But whenever we are using verb with particle, it's coming a new meaning.
It provides a new meaning, a very interesting meaning. Broken down means stop functioning. खराब ही जीवा, function करिबा बंद कर देबा. The meaning of the term broken down means चलिबा बंद कर देबा बा खराब ही जीवा. So my car has broken down. एटी ऑब्जेक्ट आउ किछि नाही. Subject like gala my car, my achis particularly subject lagi jaichi, au kiछि object nahi. Such kind of particular sentence, dear student, we call as, in such particular way where we are using phrasal verb, in such particular sentence we call those kind of phrasal verb as intransitive phrasal verb. Next, another example. The plane took off. Dear student, take means never, off means uparaku. किंतु एठी देखो द प्लेन टुक ऑफ मीन्स कौन टुक ऑफ करिबा माने कौन ऊपर को उठिबा उड़ीबा आरंभ करिबा. You can able to find in the picture the plane took off. तळु खसियो कौन कह जाय लैंडिंग. ओके, सो बोथ द फ्रेजल वर्ब्स डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. एठी जो पर्टिकुलरली हम लिखुचे टुक ऑफ एवं ब्रोक डाउन, ये जो फ्रेजल वर्ब दुईटा में देखिले दी सेंटेंस रे एमाने किछि ऑब्जेक्ट्स को कैरी करू नाहंती. जेहेतु ऑब्जेक्ट्स को कैरी करू नाहंती ई सेंटेंस गुडा करे वी टर्म देम, वी कॉल देम एज व्हाट इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब. हम तम कहिबा इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब बोली केना. ओके, सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट, on the basis of the object available in a sentence while we are using the phrasal verbs, the phrasal verbs may be two types. One is transitive, another one is intransitive. तो बेले बेले गोटे पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब कोन करथे कि ट्रांजिटिव केस रे मध्ये यूज हेइ थाए, इंट्रांजिटिव केस रे मध्ये यूज हेइ थाए. हला तो हमें देखिबा एग्जांपल किछि नै जिबा. तो फर्स्ट एग्जांपल हमें नेबा टर्न आउट. टर्न आउट गोटे फ्रेजल वर्ब डियर स्टूडेंट इंट्रांजिटिव हिसाब रे मध्ये से यूज हेइ थाए एवं ट्रांजिटिव हिसाब रे मध्ये यूज हेइ थाए. इंट्रांजिटिव केस रे जते बेले से ऑब्जेक्ट किछि नै न थाए और ट्रांजिटिव केस रे जते बेले किछि ऑब्जेक्ट से नै थाए. हमें देखिबा intransitive case re the whole town turned out to welcome the winning football team. तो एठी किछि फुटबॉल टीम देखो हमें देखिछि एवं सबु लोक बाहरी पड़चंती एही पर्टिकुलर टाउन रो एवं समने कोन करूचंती चीयर्स अप करूचंती, कांग्रेचुलेशन कहउचंती. ओके, आउ समने कोन करूचंती ना came out into the street. तो एठी turn out रो मीनिंग कोन हे गेला डियर स्टूडेंट. एठी turn out रो मीनिंग हे गेला came out, रास्ता को बाहरी पड़िबा. चलो तो टर्न आउट रो मीनिंग कोन हेला रास्ता को बाहरी पड़िबा. ना कहा को पर्टिकुलरली इठी वेलकम करिबा पई ना फुटबॉल प्लेयर्स माने जो माने विन करिसंती. नेक्स्ट ट्रांजिटिव यूज. दिस फैक्ट्री टर्न्स आउट 200 कार्स. डियर स्टूडेंट एठी देखो गोटे ट्रांजिटिव वर्ब जोटा यूज हला एवं तार ऑब्जेक्ट हमें चिन्हिबा ना कोन सेठी प्रोड्यूस हुए ना कार प्रोड्यूस हुए. तो से फैक्ट्री रे खाली जे हमें प्रोड्यूस हुए बा प्रोड्यूस करा जाय लिखि थांते तो सेंटेंस टा इनकम्प्लीट हि थांता. ऑब्जेक्ट सेठी न थाए नथिला बोली हमें कहि थांता. किंतु सेही फैक्ट्री रे ना कार प्रोड्यूस हुए ना केते अमाउंट रे कार प्रोड्यूस हुए ना 200 अमाउंट रो कार प्रोड्यूस हुए प्रति वीक रे. यार अर्थ हला एठी ऑब्जेक्ट अछि एवं एठी फ्रेजल वर्ब टा यूज हिछि टर्न्स आउट. डियर स्टूडेंट, टर्न्स आउट, व्हाट डू यू मीन बाय टर्न्स आउट हियर? हियर टर्न्स आउट मीन प्रोड्यूस. एठी टर्न आउट रो मीनिंग हि जेतला रास्ता ऊपर को बाहरी आसीबा, किंतु एठी टर्न आउट रो मीनिंग हे गेला प्रोड्यूस. सो ए इन डिफरेंट सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आल्सो इट प्रोवाइड्स डिफरेंट मीनिंग. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल. हम पुणी किछ एग्जांपल नै जेबा. एबे हम देखिबा गिव आउट रो एग्जांपल. गिव आउट इंट्रांजिटिव यूज. इंट्रांजिटिव सेंटेंस रे बा इंट्रांजिटिव वर्ब हिसाब रे केमती हमें यूज करथौ माने इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब हिसाब रे गिव आउट केमिति यूज हेतै. His patience gave out and he slapped the child hard. अस्त व्यस्त हो जिबा, become exhausted माने असह्य हो जिबा. बेले बेले देखिबो नॉर्मली छोटो पिला गुडा को बहुत विरक्त कर दियंती तुमको एवं सेही समय रे तुमे कोन करथात निजर पेशेंस को हराई देथाओ. एठी मध्ये सेम थिंग इट इज हैपन विथ हिम. His patience gave out. एठी गिव आउट माने कोन ना धैर्य हरा हे गला आ तार पेशेंस रहिला नाही. द स्टूडेंट गिव आउट असह्य से हे गला. एंड he slapped the child hard एवं से चाइल्ड को स्लैप कला हार्ड. In this way here give out means असह्य हो जिबा, विरक्तिकर हो जिबा. नेक्स्ट ट्रांजिटिव यूज.
The teacher gave out the books. They distribute. It gave out means what? It distribute. It gave out means distribute. The teacher distribute the books. ना से कौन गिफ्ट कले ना कौन पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट कले ना से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कले जेहेतु से बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कले बुक स्टडी स्टूडेंट कौन ना ऑब्जेक्ट कौन डिस्ट्रीब्यूट कले ना बुक डिस्ट्रीब्यूट कले सेति पई गिव आउट वर्ड ता एठी गोटे ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब एंड एठी गिव आउट रो मीनिंग कौन ना डिस्ट्रीब्यूट बा इशू. Dear student, in exam point of view also, participating all this or practicing all this particular example is quite important. Exam रे यही सब example गुड़ा को प्राय exam रे आसुची. So prepare it properly, understand it properly. We will move to the next. Okay, next जिबा एठी हमें classification करिबा आउ थरे phrasal verb को. Okay, तो हमें देखिबा कि phrasal verb ता three kind पुणी हमें क्लासिफिकेशन करूचे किछि फ्रेजल वर्ब को हमें कॉमन फ्रेजल वर्ब कहि थौ नॉर्मली जंती हमें देखिथिले एडवर्ब पार्टिसिपल जतिले लागुची माने एडवर्ब पार्टिकल जतिले लागुची ताको हमें कॉमन फ्रेजल वर्ब्स बोली कहूचे तापरे जतेबेले हमें प्रीपोजिशनल वर्ब्स कथा कहूची एठी वर्ब केस रे प्रीपोजिशन लगाउची देखिबा मो एग्जांपल किछि तुमको देबी तापरे आ गुटे टाइप हैला फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब्स तो नॉर्मली तो हमें कॉमन फ्रेजल वर्ब्स गुडा को देखिले या करू कॉमन फ्रेजल वर्ब गुडा को देखिली आमे एबे कंसंट्रेट करिबा प्रीपोजिशनल वर्ब्स एवं फ्रेजल प्रीपोजिशनल वर्ब ऊपर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रीपोजिशनल वर्ब. डियर स्टूडेंट, अ प्रीपोजिशनल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन. तुम जानि जो प्रीपोजिशन गुडा को प्रीवियस चैप्टर रिसेंटली पढी जो जंती इन हैला ऑन हैला ऑफ हैला बिलो हैला एबव हैला डाउन हैला ऑफ ए सब गुडा को प्रीपोजिशन. डियर स्टूडेंट से माने जेतेले यूज हेथांती भार परे परे ताको हम कोन बोली कहिथौ ना प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब बोली कहिथौ. तो अ प्रीपोजिशनल वर्ब इज अ वर्ब दैट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. तो वर्ब परे परे यदि प्रीपोजिशन लागि थिबो ताको हम प्रीपोजिशनल वर्ब बोली कहिथौ. बहुत सिंपल डियर स्टूडेंट एठी प्रीपोजिशनल वर्ब को भी हम फ्रेजल वर्ब बोली कहिथौ किंतु एठी कथार कहिवार अर्थ हैला जे सेही फ्रेजल वर्ब गुडा करे भार परे प्रीपोजिशन लागि थाए. द मीनिंग ऑफ दिस टू वर्ड्स टुगेदर इज यूजुअली वेरी सिमिलर एवं नॉर्मली प्रीपोजिशनल वर्ब गुडा करे आमे इजीली गेस कर दिथौ तार मीनिंग यार अर्थ हैला आमे इजीली गेस कर दिथौ बेसिक किछि हार्ड मीनिंग से हमको प्रोवाइड करि न थाए बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग व्हाइल वी आर यूजिंग एंड वी कैन एबल टू नो इट वेरी इजीली. Okay, next जंती गोटे एग्जांपल नै जिबा सी फाइनली डिसाइडेड ऑन डियर स्टूडेंट यार अर्थ कोन ना चूज करिवा द ब्लू कार हमें बुझी जाउची डिसाइड माने हला स्थिर करिवा डिसाइडेड ऑन द ब्लू कार माने कोन ना से चूज कला बा से स्थिर कला से ब्लू कार टे को नबो डिसाइडेड ऑन कहिला हमें जानि पाउचे बा गेस करि नउचे जे चूज कला बोली बा सिलेक्ट कला बोली. दैट्स व्हाई हियर डियर स्टूडेंट डिसाइडेड इट इज अ वर्ब and on means it's a preposition. So while we have used it, it becomes a prepositional verb and it gives a easy meaning to us. Next, phrasal prepositional verbs. Dear student, it is quite important. Phrasal prepositional verb. Phrasal prepositional verb रे कौन ही थाए ना consist of a verb. इसलिए verb गोटे थिबो by two elements. पुनी verb परे परे दीटा elements पुनी हमको देखिवार अछि ना कौन ना गोटे पार्टिकल थाई पारे आउ गोटे प्रीपोजिशन थाई पारे. डियर स्टूडेंट भार परे परे गोटे पार्टिकल थाई पारे एवं प्रीपोजिशन थाई पारे. देखिबा राजीव रियली लुक अप टू. डियर स्टूडेंट एठी देखो लुक्स गोटे वर्ब अप गोटे पार्टिकल एवं टू गोटे प्रीपोजिशन जेतेबेले कंबाइनली हमें तीनटा वर्ड को मिक्स कर दोउची लुक्स अप टू यार मीनिंग हे जाउची टू एडमायर. टू एडमायर माने कौन ना आदर्श हिसाब रे मानिबा तांको कथा को गोटी गोटी करी मानिबा. लुक्स अप टू इट मीन्स आम एग्जांपल टाको देखिनेमा ना राजीव रियली लुक्स अप टू हिज फादर. ही ऑलमोस्ट वर्शिप हिम. तांकर प्रत्येक कथा को से माने भगवान भलिया माने. तो यार अर्थ हला लुक्स अप टू एडमायर से तांकर आदर्श तापा तार आदर्श. In this way, dear student, looks up to you can able to find looks गोटे verb of गोटे particle एवं 82 गोटे preposition. तो तीनटा को हमें यूज कर दोचे तो ये प्रोड्यूस करूची गोटे phrasal prepositional verb and also provide a unique meaning. And while we are using in the sentences, while we are speaking also, writing also, it's
add charms to our spoken or writing English. Next week, dear student, we will move to the next slide. How kisi example hame nahi jiba. Breakdown. Breakdown गोटे phrasal verb, dear student. आउ आमे देखिबा breakdown रो अर्थ कोन. Dear student देखो आमे easily जानि पारुची. Breakdown means something stop functioning. Okay, अचल हे जिबा, fail हे जिबा. Example हमें नहीं जिबा. The car has broken down. And dear student, while we are using phrasal verb, we need to use according to the particular subject and the verb attached to that. जिते बेले हमें देखुचे से particular subject एवं सेत्री को helping verb लगी ची, auxiliary लगी ची, तार को form लगी ची, से को tense नौ ची. As accordingly, we need to also change the verb form of the phrasal verb. हमें सही हिसाब रे हमें change करिबा. हैज अछि हमकु perfect हिसाब रे, present perfect हिसाब रे यूज करिवार अछि. The car has broken down. Okay, so verb form also you need to understand, you need to use during that time while you are using the phrasal verb. एठी हमें बुझी गले जे the car has broken down means कार टी अचल हे. Next, तार आगुटे मीनिंग ब्रेकडाउन आगुटे मीनिंग प्रोवाइड करता है कॉन्टेक्स्ट बेसिस रे एतले हमें यूज करथाउ. ब्रेकडाउन रो अर्थ मध्य हला कोलैप्स बा बर्स्ट करि जिबा, बर्स्ट इनटू टीयर्स, जणे दुख रे भांगी पडिबा को मध्य हमें कहिथाउ ब्रेकडाउन. केमती यूज देखिबा. शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड ऑफ हर हस्बैंड डेथ. से भांगी पड़िला, दुख रे कांदी पकेला जेतेबेले से तार हस्बैंड रो डेथ कथा सुनिला. देखो, you can able to find that particular woman is crying over there. से भांगी पड़ी दुख रे. So dear student, broke down also we can use while we are very much particularly upset and we become sad for some particular reason. Okay, so she broke down when she heard of her husband's death. हमें broke down को जेतेबेले दुख रे भांगी पडुचे, कांदी पकोचे, सेही केस रे मध्ये यूज करि परिबा. कोनसी पर्टिकुलर व्हीकल्स स्टॉप करूची फंक्शनिंग, सेही केस रे मध्ये हमें broke down को यूज व्यवहार करि परिबा. एटा मन रखिबार अछि. नेक्स्ट हमें जिबा break into. ब्रेक रे पुणी कौन लाग गला, इनटू लाग गला. तो डियर स्टूडेंट एटा कौन हे गला ना, ब्रेक इनटू मींस एंटर बाय फोर्स, माने बल प्रयोग करी ही जदी प्रवेश कला जोर जबरदस्ती ताको हमें कहिबा ब्रेक इनटू बोली. तो गोटे एग्जांपल नै जिबा ना, थीप्स ब्रोक इनटू आवर हाउस लास्ट नाइट. एक्जाक्टली तमे एंती क्वेश्चन गुडा को पाइबो एग्जाम रे एवं यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर. तुमको क्वेश्चन पचारिबो, यूज द एप्रोप्रिएट पार्टिकल. तुमको ब्रोक देथिबो सेठी. ओके, सेठी तुमको कोन देथिबो ना, ब्रोक देथिबो एवं तुमको कोन करिवार अछि, एंती ब्रोक देथिबो तुमको इनटू लगेबार अछि. पार्टिकल चिन्हिबो ना, ब्रोक सहित कोन लागिले, इनटू लागिबो ना डाउन लागिबो, जे यार मीनिंग एंटर बाय फोर्स हे जिवो. You need to practice it properly. So while you will practice it, it may be very easy for you to make it understand and uses its uses. Okay, so next we will proceed to the next. It is dear student break in. देखो हमें break down कले, break into कले, एबे break in करिबा. breaking रो मीनिंग कोन ना, breaking means interpret a discussion. दि जन को मध्य कथावार्ता होची, तमे आलोचना रे बाधा सृष्टि करूचो, तमे कथा भितरे कथा कहूचो, and they are particularly getting upset and they are particularly confused what you are telling. They cannot able to understand and you are interpreting them. So interrupt a discussion, आलोचना रे बाधा सृष्टि करिबा बा कथा मध्ये कथा कहिबा, ताको हमें कहि थाउ break in. She break in as he was speaking. जेते बेले से कहूथिला, से break in करूथिला, से तार कथा रे बाधा सृष्टि करूथिला. तो break in means आलोचना रे बाधा सृष्टि करिबा. रिमेंबर इट. नेक्स्ट, ब्रेकिंग रो आ गोटे मीनिंग आम यूज करि परिबा टेम केस रे. डियर स्टूडेंट, टेम मीन्स पालिबा, पोसिबा, कथा मनैबा. जंती आम टेमिंग करथाउ हमर पेट डॉग को, पेट कैट को, पेट पैरट को, आम सब गुडा कोन करथाउ, तालीम देथाउ. आम जहा कहिथाउ, आम जहा करिया को करथाउ, से करिथाय. तो टेम मीन्स तालीम देबा बा मन करेबा, कथा मनैबा. डियर स्टूडेंट, एठी गुटे आमे एग्जांपल नै जिबा ना, ब्रेकिंग द मीनिंग आमे तालीम देवा केस रे मध्ये यूज करि परिबा ना. केंती यूज करि परिबा, इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक दैट हर्ट्स इन.
बेले बेले कौन ही थाए ये जो फ्रेजल वर्ब गुड़ाक सेपरेबल हो जाए माने सी जगह आमे देखिबा जे एठी देखो केंती हिची एठी जो फ्रेजल वर्ब टे सेपरेबल हो जाई ब्रेक टाइप पटे लागि छि इन टाइप पटे लागि छि औ दैट हर्ट्स इडी कोन लागि जाई छि एडी पर्टिकुलरली तमरो जो प्रोनाउन आमे कहि परिबा बा जो पर्टिकुलरली हर्ट्स टी को मनेबा डिफिकल्टी से विषय को हाई छि ना हर्ट्स को मनेबा भारी डिफिकल्ट हर्ट्स को कथा मनेबा तांको पोसिबा बहुत डिफिकल्ट हला नेक्स्ट तापरे ब्रेक ऑफ ब्रेक रे ओ एफ एफ जिते बेले लागुची आमे तार मीनिंग कौन प्रोड्यूस करूची ना तार मीनिंग हला स्टॉप फॉर ए रेस्ट और ब्रेक आमे आराम से विश्राम नेबा को आमे कौन कहि थाउ ना ब्रेक ऑफ कहि थाउ हला ब्रेक ऑफ माने काम बंद कर देबा एवं किछि समय विश्राम नेबा किछि समय ब्रेक नेबा आमे ब्रेक ऑफ कहि थाउ तो जेंति गुड एग्जांपल आमे नै परिबा लेट्स ब्रेक ऑफ फॉर 10 मिनिट्स एबे 10 मिनिट आमे कोन करिबा विश्राम नेबा कामटी को बंद करिबा so in this way break off means stop for a while for rest purpose okay ए भलिया आमे किछि एग्जांपल नै गले फ्रेजल वर्ब रो पुनी नेक्स्ट एग्जांपल दिबा bring out रो अर्थ कोन bring out means publish a student bring out means what publish प्रकाश करिबा माने गोटे बुक पब्लिश करिबा गोटे मैगजीन पब्लिश करिबा The publishers have brought out a new edition. Dear student देखो एठी brought रे जते बेले out particle लागि जाउछि out particle लागि गला परे brought out हे जाउछि एवं ये गोटे मीनिंग प्रोड्यूस करूछि सेटा हला पब्लिश एवं पब्लिश करिबा माने कोन प्रकाश करिबा So the producers have brought out a new edition. Question रे exam रे आसी पारे the publisher have brought a new edition. Exam रे तमे आंसर लिखिबो brought out means publish. मन रखिबार अछि brought out means publish. Next bring off. Dear student एठी गुटे हमें गुटे मजादार कथा कहिबा bring मान तमे जानछो bring माने आनिबा off माने कोन गोटे जिंस को ऊपर करेबा बुझी परछ तो जण को आनी की ऊपर करेबो माने कोन तार उन्नति चाहिए गोटे गोटे बेले फ्रेजल वर्ब रो मीनिंग को गेस करी हुए एंड व्हाइल वी आर गेसिंग आल्सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग तो ब्रिंग ऑफ माने जण को ब्रिंग ऑफ करेबा माने कोन तार उन्नति करेबा ताको कोन करेबा हमें एजुकेट करेबा तार लालन पालन करेबा तो ब्रिंग ऑफ मींस शिक्षा देबा बा लालन पालन करेबा इट यू कैन एबल टू फाइंड that lady is bringing off the child को bringing off करूची माने कोन शिक्षा दान करूची तार कथा बुझुची तार लालन पालन करूची so in this way in this context wise we may able to use the phrasal verb like bring off तार एठी देखो verb form change हेची जेहेतु was अछि he was brought off हे जाईची bring रु कोन हेगला brought off हेगला so he was brought up by his aunt एठी जो पिक्चर तुमे देखुजो he was brought up by his aunt okay so in this way dear student bring off means लालन पालन करिबा बा शिक्षा देबा ताहा परे एबे आउ किछ एग्जांपल हमें नै जिबा कॉल रिलेटेड कॉल ऑफ कॉल ऑन कॉल off ऑफ तो यार मीनिंग हमें देखिबा कॉल ऑफ means giving call to someone डाकिबा बा टेलीफोन करिबा याको में कोन बोले कहिबा कॉल ऑफ समन और टेलीफोन आई विल कॉल यू ऑफ if I need your help dear student you can able to see the sentence structure here you can able to find very nicely here the word call of it is used but it is separable over here it is call एवं कोन लागला देखिबा yes देखो call and it is off call off I call you off if I need your help मु डाकिबी जेते बेले तमरो आवश्यक मु फील करिवि next call on means what visit to someone साक्षात करिबा तो call on means साक्षात करिबा call off means फोन रे डाकिबा बा टेलीफोन करिबा next they call on me yesterday for about an hour तो ताकू केवे डाकिथिले ना yesterday डाकिथिले एठी call on रो मीनिंग डियर स्टूडेंट कोन हेगला एठी call on रो मीनिंग हेगला call on रो मीनिंग कोन हेगला डाकिबा एवं एठी कॉल अप रो मीनिंग हला डाकिबा एठी कॉल ऑन रो मीनिंग हे गला विजिट करिबा बा साक्षात करिबा
तो ताकू साक्षात करिया पई माने कोन करथिले आस्थिले तो दे कॉल ऑन मी यस्टरडे फॉर अबाउट एन आवर देखो एठी केयरफुली हमें यूज करिवा काहे कि ना कॉल ऑफ कॉल ऑन जते बेले ए जो पार्टिकल गुडा को यूज होची प्रीपोजिशन गुडा को यूज होची मीनिंग चेंज कर दोची हमकु सुनिया पई तो इक्वल लागि थी पारे बट व्हाइल वी विल नॉट प्रैक्टिस इट मे बी कंफ्यूजन फॉर अस तो याकू प्रैक्टिस करिवा निहाती जरूरी कॉल ऑफ कहिले डाकिवा टेलीफोन करिवा कॉल ऑन कहिले विजिट करिवा बा साक्षात करिवा नेक्स्ट जीवा कॉल ऑफ माने किछि गुटे बातिल कर देबा कैंसिल कर देबा ताको हमें कॉल ऑफ बोली कहिताउ तो डियर स्टूडेंट द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक माने तांकर स्ट्राइक बा आंदोलन टू कोन कर देले ना कैंसिल कर देले द वर्कर्स हैव डिसाइडेड टू कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक माने स्थिर कले जे तांकर जो स्ट्राइक ताको कैंसिल कर देले स्थिर कले स्टॉप कर देबे तो हियर कॉल मींस कैंसिल बातिल कर दवा प्रत्याख्यान कर दवा so in this way dear student we have particularly used the term and in this way we have particularly understood the particular concept next dear student ame jiba next concept ku okay next here call off we have already done next we will move to the next give off give in and give away very interesting give off means what give off means let's try to explore कि गेस करिवा टिप माने देवा ऑफ ऑफ करे किंतु हम एते एक्सप्लेन करू जेडी गेस करू छी गिव देवा एते देवा एते देवा एते देई देवा जहां हम पाखरे अछि देई देवा आउ किछि रहिबनी लास्ट को कहबो मु हारि गली बुझी फैल इट मींस गिव अप मींस स्टॉप बंद करिवा बा त्याग कर देवा इट मींस you are fed up of a particular things एवं तमे कहूछ सेठी मु गिव अप कर देली मु छाडी देली ए जिंस इट मींस ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग से कहला मु आजिठु आउ स्मोकिंग करबिनी गिव अप पर्टिकुलरली स्मोकिंग माने फेड अप हे गला गिव अप कर देला त्याग कर देला छाडी देला बटे गिव अप डियर स्टूडेंट गिव अप रो वर्ड तो तमे हिस्ट्री रे यूज करथा अशोका गिव अप द वॉर अशोका कौन करथिले वॉर छाड़ी देथिले त्याग करथिले प्रत्याख्यान कर देथिले से डिसाइड करले मु आ युद्ध करबी नै को युद्ध परे कलिंग युद्ध परे ओके नेक्स्ट गिव इन मींस व्हाट सरेंडर आत्मसमर्पण करिवा देखिथिबो जते बेले हमें कोनसी जिंस रे हारि जे थाउ बा थकी जे थाउ हमें कोन करथाउ गिव इन कर देथाउ जंती द सोल्जर्स फॉट ऑन सोल्जर्स माने एठी युद्ध करथिले किंतु कोन हला बट फाइनली गिव इन हमने सरेंडर कर देले कहेंगे ना द सिचुएशन इट वाज अनकंट्रोल द स्टूडेंट हियर गिव इन मींस आत्मसमर्पण करिवा बा सरेंडर करिवा सो हियर रिमेंबर गिव अप मींस त्याग करिवा स्टॉप डूइंग समथिंग गिव इन मींस सरेंडर समथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग और व्हाटएवर यू आर पर्टिकुलरली acquainted with you are surrender of that particular situation एवं एठी हमें देखिबा give away means distribute the student give away means distribute गोटे जिंस वितरण करबा को हमें give away कहि थाउ जेंति एठी गोटे एग्जांपल नै जिबा देखो चीफ गेस्ट जेतेले हमर स्कूल को हमें डाकी थाउ एनुअल फंक्शन गुडा करे इंडिपेंडेंस डे गुडा करे से कोन करथांती हमकु give away करथांती कोन करथांती give away करथांती give away वन करबा माने कोन डिस्ट्रीब्यूट करबा द चीफ गेस्ट gave away the prizes एठी ऑलरेडी प्राइज का प्रोवाइड कर सारलेनी सेति पे ऑन दैट बेसिस वी हैव यूज्ड द वर्ब form in past form हमें कौन लिखिले ना gave away लिखिले so in this way particularly we have learned give off give in give away कौन है गला meaning ना give off means stop functioning something stop doing something give in means surrender and give away means distribute okay so in this way we have learned this thing so dear student many particularly phrasal verb we have learned today right now it is the time to warm up something and to particularly evaluate your understanding parts. So let me evaluate and one by one school also you can participate in this particular process. So I'm going to ask you only 5 plus 5, 10 question and you are going to do it. It is quite easy. So you can do it I think. So first question, get ready to answer my question. Tips broke, decks the house last night. Broke to or broke into. What will be the particle use will be here. ब्रोक रे को पार्टिकल लागिले तार अर्थ नै जबो जे जोर जबरदस्ती पटा पसी आसिले एवं सब चोरी करी कि नै गले
Into. Into. Very good. Very good. Into. Excellent. Very good. Very good. Your answer is correct. Next question. He has given back smoking. से कौन कर दिला? Given in कर दिला ना given off कर दिला? माने से छाड़ी दिला. क्या को कर दिला? What will be the answer, dear student? Answer. Up. He was given up smoking. Very nice. Very nice. So you have understood. Very nice. Given off. So he has given off smoking. से smoking करिवा छाड़ी दिला. My car has broken decks. Down or up? कौन है वो? Down. Down. Very good. Very good. Down. So my car has broken down means car टी functioning करिवा बंद कर देला. इठी broken रे तले down लगी जाउची से गोटे meaning provide करूची, that is stop functioning. So my car has stopped functioning, that is broken down. Next, the workers have decided to call decks their strike. Call off their strike or on their strike? Up. Very good. Very good. Call off means, yes, call off means cancel. Call off means cancel. Your answer is correct. The workers have decided to cancel their strike. It means call off their strike. Very nice. Okay, next Diva. Let's break decks for 10 minutes. Into or off? Up. 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 OFF off. Very good. Let's Because break up 10 means, minutes. very good, very good. Break up means stop doing something regarding rest purpose. Very good. Okay. Next, if question गुड़ा को तो solve कर देलो, तापरे आमे देखिवा आगुटे particular question. आगुटे type of question एटी कौन अछि? ना complete the sentence using the phrasal verbs and the objects in the appropriate places. Put the verbs given in the brackets into the correct tense. हम correct tense तक अभी हमें लगेगा. ना first question कौन अछि? ना I decks on my way to school. I came across on my way to school. Came across. अच्छा एठी पुणी हमकरो ऑब्जेक्टिव मध्ये लगेबार अछि डियर स्टूडेंट एटा ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन इछि ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स ता अछि त हमकु ए जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव टा भी प्लेस करिवार अछि फ्रेजल वर्ब परे परे कोहा आउ थरे ट्राई करो कि कहउतलो फ्रेजल वर्ब परे परे ए ऑब्जेक्टिव को लगेबार अछि यस I came across a strange animal ताकु लगेबार अछि on my way to school. मु गोटे अद्भुतिया एनिमल रो संस्पर्श रे आसली जेतेले मु स्कूल रो रास्ता रे आसुथिली. So I came across a strange animal on way to school. Next, it is better to decks throw away broken chairs. एटा को लगा अदल बदल करो. In that particular way, what will be the answer? देखो करेक्ट कहलो. एबे नेक्स्ट ट्राई करो. A question. It is better to decks throw away or broken chairs. याकू केमती लगेबो? Try. Very easy. It is better to throw away the broken chair. Very good. It is very easy that you have used here. It is better to throw away. एठी द टा लगेबो काहे कि ना वर्ब फॉर्म रे द टा मागुची तो हमको लगेबार अछि the broken chairs. Very nice because if broken chair को कहूची से इंडिकेट करूची हमको डिटरमिनर द लगेबार अछि. Very good. It is better to throw the broken chairs away. Okay, next. It away टा लागिबो dear student. It away टा लागिबो by mistakenly away is particularly omitted over here. Away टा इठी लागिबो. It was a mistake. My friend Dex pointed out it. याकू केमती लगेबा? It is a mistake. My friend pointed. काहे कि ना watch इठी लागिची. Dear student देखो इठी watch लागिची. तो point रो कोन हिजबो? Pointed हिजबो. Pointed out it. No, pointed it out. Pointed it. Pointed it out. Yes. तो देखि दियो pointed it out. तो एठी कोन हिगला? It was a mistake. My friend pointed it out. Okay. Next. Yes. Who is Dex nowadays? Looking after this building. Very simple. Very simple. Already Who the is looking after this building? Very good. Nowadays. Exactly. The answer is correct. Who is looking after this building nowadays? Answer correct है गला. अपने next जीवा. His son died
his sons died has never এটি কোন হলা his sons died he has never get over or his sorrows get over his sorrows. very good यार आंसर तुम देखिदेल बोधे आंसर टा किंतु करेक्ट हला very good already you have done the answer correctly so his son died he has never get over his sorrows very nicely you have done all this question dear student so I hope you have understood and in the next particular class I will come with some new tricks so that we can understand the phrasal verbs in a better way and it will provide a lot of interesting particularly fact we can say and we need to learn its uses very much because while we are using it in our daily uses of sentences or while we are speaking also phrasal verb it is quite interesting while we are speaking also we'll get amusement and the listener also will get very particular amusement to listen to us. Yes student I hope you have understood the concept and we will again meet the same particular concept in my next part 2 part and is there any questions you will raise? Okay, so thank you very much dear student. We have reached to the time limit and right now it is your time for recess. So thank you. Have a nice day. Thank you, sir.